Hello everyone, once again welcome back to this channel. In this video we are going to start definite integrals. We all know that there are two type of integration. The first one is indefinite integration, which represents antiderivative of a function, right? And the second one is this definite integral, and this represents area under the curve. Sir, what does it mean? I'm going to explain this later in this video, right? So far, in all the previous videos, we have covered entire indefinite integration, like the basic formula of integration, different methods of integration like substitution, partial fraction, by parts, right? So this video, I'm going to dedicate this definite integral part. Okay, so guys, this topic is going to be very easy only for those students who have covered entire indefinite integration. Okay, so this definite integral, as I told you, this represents area under the curve. Area under the curve. Let's take an example. Let's say there is a function fx equal to x plus 2, right? Which can be written as y equal to x plus 2. And you can see this is a linear equation in two variable. The degree, the power of x is 1, the power of y is 1. So this is a linear equation. So which represents a straight line in 2D geometry, right? So if I draw the graph of this function, this will look like this, when y is 0, then x will be 2. And if y is 0, then x will be minus 2. And if x is 0, y will be 2. So this should go like this. Y equal to x plus 2. So guys, this is a straight line and the equation of this line is y equal to x plus 2. Okay, so let's say there are 2 points A and B on this line, and if we draw perpendicular from A and B on the x-axis, it should look like this. Okay, so guys, you can see these two perpendiculars will be parallel to each other. Okay, and this is a straight line, this is also a straight line. So these four lines are making a trapezium. They all are making a trapezium. This is the area under the straight line. This is the area under the straight line. Okay, and suppose आपसे कहा जाए कि इस trapezium का area क्या होगा, then you can simply apply the formula of area of trapezium, right? That is half sum of parallel side into height, right? So we can easily apply that formula. But suppose, let's say we are given a curve which is y equal to x square. Okay, clearly you can see this is the equation of a parabola. Parabola जो हो कि along y-axis upwards बन रखा होगा in positive direction. Okay. Okay. So guys, let's say again there are 2 points. One is A and the other one is B. And suppose we draw perpendicular on x-axis from point A and point B. So they should look like this. Okay, so area under this curve, this shaded portion represents area under the curve, right? Now you can see these two perpendiculars are parallel to each other. आपस में तो parallel हैं, right? ये भी एक straight line है, ये भी क्या है, एक straight line है. But this is not a line, this is a curve. So ये जो shaded portion है, I cannot say कि ये एक trapezium है. ये trapezium आप इसको नहीं कह सकते. Trapezium होने के लिए यहाँ पे 4 lines होना जरूरी था, right? इसको जैसे आप इसको देखिए, जैसे यहाँ पे ये एक line है, ये एक line है, ये एक line है, ये एक line है. यहाँ पर clearly आपको 3 sides तो आपको दिखाई दे रही हैं, but यहाँ पर आपको curve दिखाई दे रहा है. ये कुछ आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये आप इसको ऐसे देख सकते हैं. सो इससे हम ट्रेपेजियम नहीं बोल सकते. सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड एरिया अंडर दिस कर्व? इस सिचुएशन में इस एरिया को कैसे फाइंड किया जाए?
तो गाइस इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज किया करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व। अगर कभी भी कोई कर्व हमें गिवन है, लेट्स से देयर इज अनदर कर्व, लेट्स से देयर इज अनदर कर्व, ओके, and the equation of y is fx, and let's say there's a point and there's another point on this curve, and if we draw two perpendiculars on x-axis from these 2 points, so this shaded portion, this is the area under the curve, और इसी एरिया को बेटा हम लोग यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। सो इसे कैसे फाइंड किया जाए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना है डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल को हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, सो उसका मेथड एक बार आपको समझना है। लेट्स से ये जो पॉइंट है ये है x इक्वल टू a, द इक्वेशन ऑफ दीज टू ऑर्डिनेट्स आर x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ओके। सो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, दिस शुड बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। आपको इंटीग्रेशन का जैसे साइन आप बनाते थे वही आपको बनाना है। ये कर्व की जो इक्वेशन है गाइस, द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज y इक्वल टू fx, so we will have to integrate fx with respect to x, ओके। बट इतना अगर आप करेंगे तो ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही रहेगा। हमें एरिया चाहिए, और एरिया में एक लिमिट है कि हमें कहां से कहां तक का एरिया चाहिए। तो गाइस इन द ग्राफ यू कैन क्लियरली सी, हमें एरिया जो है इट शुड स्टार्ट विद a और खत्म कहां पे हो जाए, b पर। a से शुरू हो जाए एंड b पर खत्म हो। हमें a से लेकर इस b तक का एरिया हमें यहां पर चाहिए। सो दिस a एंड दिस b दे वर्क एज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे ये a हमारे लिए लोअर लिमिट का काम करती है और ये b हमारे लिए यहाँ पे अपर लिमिट का काम किया करती है। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप इसको सॉल्व करते कैसे हैं, ओके। सो ये हमारा जो है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इंडेफिनिट में ही आपको यहाँ पे 2 लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, ओके। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। लेट्स से वी हैव टू इंटीग्रेट x square with respect to x, and suppose there is a limit 1 to 3. This 1 is the lower limit and this 3 is upper limit, and this indefinite integral problem is representing area under some curve, okay. Okay sir, clearly you can see this x square, this y equal to x square is the equation of a parabola. We have to use limit 1 and 3, so 1 यहां पर आपको दिखेगा एंड 3 आपको यहां दिखना चाहिए। सो ये जो एरिया है, इस एरिया की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो मेथड, इसका जो मेथड है गाइस, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस x स्क्वायर जस्ट लाइक इंडेफिनिट इंटीग्रल। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर? द आंसर इज x क्यूब बाय 3, देन an arbitrary constant k is added and then 3 and 1। ये इतना आपको इस तरह से लिखना है। जो भी आपकी अपर लिमिट है उसे यहां लिखिए, देन लोअर लिमिट 1 को आप यहां पे लिखेंगे, राइट। देन wherever you see x in this expression inside the bracket, wherever you are seeing x, you will have to put x equal to 3 upper limit। so x की जगह पे 3 cube upon 3 plus k, then minus अगेन x की जगह पर जहां पर भी x है उस x की जगह पर हमें x इक्वल टू 1 पुट करना है। सो x इक्वल टू 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस k, सो क्लियरली दिस विल बिकम 27 बाई 3 प्लस k माइनस 1 बाई 3 माइनस k, और k से k will be cancelled out। 27 by 3 minus 1 by 3, this is 26 by 3, and this is area under the curve। ये है area under the curve, okay। Let's take another example। Let's say we have to integrate x and limit is 0 to 5। देखो y, x जो है यानी y जो है वो x के इक्वल है। This is a straight line, ये straight line को रिप्रेजेंट कर रहा है। y इक्वल टू x और लिमिट है 0 से 5, 0 से 5, ओके। सो ये डिस्टेंस 5 है और ये y इक्वल टू x है, तो ये 5,5 है ना,
तो ये डिस्टेंस भी 5 होगी। सो अगर मैं बोलूं कि एरिया क्या होगा, सो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो आंसर शुड बी 25/2। बट ये जो आंसर आपने फाइंड किया है, ये आपने फाइंड किया बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला, ओके। बट सेम थिंग वी आर गोइंग टू फाइंड बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्मूला। हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर एक्स को, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के। देन एक बॉक्स आपको इस तरह से बनाना है, यहाँ पे लिखेंगे 5 एंड हियर यू विल हैव टू राइट 0। देन x की जगह पर आप पुट करेंगे 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के। दिस विल बिकम 25/2 प्लस के माइनस 0 एंड माइनस के, एंड क्लियरली यू कैन सी द आंसर इज अगेन सेम। चाहे इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, आंसर दोनों सिचुएशन में सेम आएगा। बस प्रॉब्लम क्या है कि वो फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई हो सकता है जब ये स्ट्रेट लाइन हो, जब ये स्ट्रेट लाइन हो। इन द सिचुएशन ऑफ कर्व दैट फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड हियर। यहाँ पर ये कर्व है बेटा, ट्रापेजियम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो लग सकता था। तो इन सभी सिचुएशन में फिर हमें यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल ही लगाना होता है। ओके, सो गाइज इतना हम समझे कि डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो प्रॉब्लम्स देखिएगा। लेट्स से वी हैव टू इंटीग्रेट x plus 1 and there is a limit 2 and 5. Okay, 2 is the lower limit and 5 is the upper limit. Then in this situation integration of x should be x square by 2. The integration of 1 will be x, then arbitrary constant k is added, then 5 is upper limit, 2 is the lower limit. Now inside this bracket wherever you see x, you will have to put 5 in the place of x. So 5 square upon 2 plus 5 plus k minus, now x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 plus 2 plus k। सो क्लियरली k से k कैंसिल होगा। 5 स्क्वायर होता है 25 अपॉन 2 प्लस 5 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 4/2 which is 2 minus 2 25/2 5 minus 4 1 and 2 plus 25 27 अपॉन 2, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है यार। 25/2 माइनस 4 21/2 एंड 5 माइनस 2 3 27/2। गाइस यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, हम जब भी k ऐड करेंगे वो k हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए आगे के सभी क्वेश्चन में मैं k ऐड नहीं करूंगा। ओके, क्योंकि आपको मालूम है जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा, राइट। ओके, सो suppose there is a trigonometric function sin square x, lower limit is 0 and upper limit is pi/2. So guys this is a trigonometric problem. हमारे पास sin square x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। So first of all we need to convert this sin square x in some integratable form, right? So 0 से pi/2 sin square x को हम लिख सकते हैं 1 minus cos 2x upon 2. So now 1 can be integrated. The integration of 1 is x. Integration of cos 2x is sin 2x upon 2. दोनों के डिनोमिनेटर में ये 2 भी आ जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 भी आ जाएगा। ओके, यहाँ pi/2 इधर रहेगा 0। ओके, सो नाउ x की जगह पे pi/2 पुट करेंगे, pi/2 और माइनस साइन 2 इंटू pi/2। In denominator we have 4. Now अब हम x की जगह पे 0 रखेंगे, 0/2 minus sin 0 upon 4. Okay, so this will become pi/4. This is sin pi, and these two will become 0. So pi/4, and the value of sin pi is also 0. So the final answer will be pi/4. So guys, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बच्चों। जैसे ये किया, let's say we have to integrate 1/√1 minus x square. So and lower limit is 0 and upper limit is 1. So guys, clearly special case formula is applicable here. We all know that there were 6 special cases when a quadratic form used to be there in denominator. One of them is root a square minus x square, and its answer is sine inverse x by a. Okay, so in this situation
the value of a is 1. The value of a is 1. So its integration should be sine inverse x by 1. Okay, and there is no need to add arbitrary constant k, because you all know that k will be eliminated, right? Okay, so in this situation, upper limit is 1, lower limit is 0. So now first of all we have to put x equal to 1, then minus, and then we'll have to put x equal to 0. So our answer will become pi by 2 minus 0, and final answer will be pi by 2, right? Similarly, let's say we have to integrate 0 to 1 x into ax. Now in this situation, by parts rule will be applied, because these two functions are in multiplication. This x is a polynomial function, algebraic function, and this e की पावर में x, this is exponential function. And according to Euler rule, algebraic function comes before exponential function. So this x will be taken as first function, and this ex will be second function. So according to by parts rule, first function as it is, then integration of second minus derivative of first, integration of second, and then the integration of this entire expression 1 0 x ex. The integration of ex will be ex, and no need to add k. You know that k will be cancelled out when we apply the limit. So now first of all we will have to put x equal to 1 a to the power 1 minus e to the power 1. Then we will have to put x equal to 0. So this e minus e, this is 0. 0 minus e to the power 0, this should be 1, and minus minus plus, this 1 is the final answer. Okay, so guys, now let's take another example and a very important concept, right? A new concept. Question is, we have to integrate 2x upon 1 plus x square. Lower limit is 1, upper limit is 3. Okay, and you all know that in this situation we will have to use substitution method. As you can see, father in denominator, son in numerator, this 1 plus x square will be taken t, right? हम तभी इसको solve कर पाएंगे, बिना t let किए तो नहीं बनेगा, है ना? So देखो होता क्या है, हम आपसे कहते हैं let's say 2x upon 1 plus x square. अभी मैं लिमिट नहीं लिखता हूं यहाँ पे, okay, without any limit. This is fx, and you know that this 1 plus x square will be taken t. Okay, so now this should be differentiated with respect to x. तो 1 का डेरिवेटिव 0, x square का डेरिवेटिव 2x, t का डेरिवेटिव will be dt by dx. So ये जो fx है ये चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 plus x square की जगह t, 2x dx dt, 1 plus x square की जगह t, 2x dx dt. Okay, so now integration of 1 upon t is log t, and the value of t again 1 plus x square. So this is the value of fx. Guys, the integration of 2x upon 1 plus x square is log 1 plus x square. But हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, हमें तो लिमिट वाला इंटीग्रेशन चाहिए, लिमिट के साथ हमें इंटीग्रेशन चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल आंसर हमारा आता है, इस आंसर में ये जो हमें 1 से 3 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या आया? इंटीग्रेशन इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, हमने इंटीग्रेशन लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन ये है. फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई आप इधर 3 रख लो, इधर 1 रख लो. अब हम यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस log 1 प्लस 1 स्क्वायर, एंड फाइनल आंसर विल बी 9 प्लस 1 10 माइनस, बीच में माइनस, एंड माइनस log 1 प्लस 1 2, which can be written 10 by 2, and answer will be log 5. हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा? log 5, राइट? अब ये था इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड कि पहले आप क्या करोगे,
पहले आप बिना लिमिट के इसको इंटीग्रेट करोगे, बिना लिमिट के इंटीग्रेट कर लिया इतना, ओके, फिर हम उस पर बाद में लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये एक तरीका हो जाएगा। बट एक और मेथड यहाँ पे चलता है बेटा, देयर इज अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, which is, suppose we have to integrate 2x upon 1 plus x square when lower limit is 1 and upper limit is 3. So you all know that first of all we will have to put this x square 1 plus x square as t, okay, 1 plus x square equal to t, and when we differentiate this function 2x dx equal to dt, and now this expression should look like, in denominator 1 plus x square, in the place of 1 plus x square we can write t, and in numerator 2x dx is equal to dt, okay. So guys, now one thing that you need to remember, whenever you are doing substitution, you will have to change the limit, okay, according to substitution. This limit 1, lower limit 1 and this upper limit 3, they are according to variable x. But now the variable has been changed. Earlier the entire expression was in terms of x, but now the entire expression is in terms of t. So we have to change the limit according to this substitution. Now what should be the new limits? So guys, the method of finding new limits, what was the old lower limit? It was x equal to 1. Put this x equal to 1 in this expression. What should be the value of t when x is equal to 1? Answer is 1 plus 1 square. Answer is 2. When x equal to 3, what should be the value of t? This 3 is the old upper limit. Okay. Now what should be the new upper limit? The answer is 1 plus 3 square, and answer is 10. So this 2 is new lower limit and this 10 is the new upper limit. And now guys, we can integrate 1 by t and answer will be log t. 10 and 2 are the upper and lower limit respectively. Now guys, there is no need to convert this t, there is no need to bring this expression in terms of x again. There is no need to put t equal to 1 plus x square. We can directly put t equal to 10 minus then t equal to 2, and you can see our final answer will be same in both the situation. log 5 यहाँ पर भी, log 5 वहां पर भी, दोनों ही सिचुएशन में आंसर विल बी सेम, ओके। सो अब आपको जो भी मेथड सही लगेगा आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, ओके। मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू ये चीज समझाता हूं। लेट्स से वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to pi by 2 sin square x into cos x, and you all know that in this situation sin x will be taken t, okay, and when this is differentiated with respect to x, this sin x becomes cos x, t will become dt by dx, okay. So now after this substitution this should look like t square cos x dx will be dt. But one thing that we always forget is we do not change limit. So guys, what should be the new limit? This 0 is the old lower limit. Put x equal to 0 in this situation. आप यहाँ पे x equal to 0 रखिए तो t की वैल्यू आ जाएगी sin 0, and when x equal to pi by 2 is taken, then the value of t should be sin pi by 2. So the final answer will be 0 to 1. So this can be integrated like t cube upon 3 1 0, and again we do not have to bring this t in terms of x again, okay. We can directly put t equal to 1 and t equal to 0 in this expression, and answer will be 1 by 3 minus 0 by 3, and final answer is 1 by 3. So guys, this is the definite integration and the concept of changing the limit, okay. So in next video I will teach you the properties of definite integrals, okay. I'll see you there in the next video. Bye bye, take care.